हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली का ये लुक शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड दिस इज़ वेरी फन टू क्रिएट। इसके साथ मैंने सम गोल्ड ज्वेलरी ऐड किए हैं, एक बड़ा सा झुमका, एक नेकलेस और एक चूड़ डाला है। ये पूरा लुक है जो आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ में। एंड इसके साथ मैंने एक बन भी बनाया है, वो भी बहुत ईजी है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। First, for priming my face, I'm using this MAC Prime नेचुरल रेडियंस बेस जो कि गोल्ड लाइट में है। एंड इसको मैं अपने हाथों को भी लगा रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग दिस ऑल ओवर माई फेस विथ माई फिंगर टिप्स। नाउ टू प्राइमिंग मोर, आई एम यूजिंग दिस प्राइमर फ्रॉम colorbar. This is a silicone based primer, so if you have any pores or if you have very oily skin, this primer is a very good option. Today I'm gonna do very light makeup, but still I need to correct some dark spots on my face. For that I'm using the color corrector from the brand l.a.girl Pro and I'm in the shade orange. So I'm applying this underneath my eyes and the inner corner of my mouth and little bit on my around the nose area. इसको मैं अपने हाथों से लगाने वाली हूँ in a circular motion. And after that I'm using the Estee Lauder foundation in the shade Cashew. It's a very high coverage foundation, so it's always better to use less. यहाँ पे मैं अपने finger tips की मदद से पूरे face पे apply कर रही हूँ and then I'm going to blend this foundation with a flat top foundation brush. Always better to use medium high coverage foundation for your no makeup look or for daytime function, because इससे आपको अच्छा खासा कवरेज भी मिल जाएगा एंड आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, इसलिए आपका फेस केकी भी नहीं दिखेगा। Today I'll be using two concealers. First one is l.a.girl Pro Concealer in the shade Beige Medium and the second one is L'Oreal True Match Concealer. First one is for hiding the dark circle and the second one is for highlighting my face. So I'm applying this on the underneath my eyes, bridge of my nose, little bit on my forehead and my cupid's bow and little bit on my chin as well. And for blending again I'm using the same flat top brush, and for the underneath area I'm just going to dab the brush like this. If you are not comfortable with the brush, you can always use a beauty blender. Now I'm going to set everything on my face with this K Beauty translucent powder. This is one of the best translucent powder I have ever used. I'm also applying little bit of powder on the neck area and also on my ears. After that I'm going to contour my face, and for that I'm using this Wet n Wild Duo highlighter and contour palette, and I'm using this contour shade. I'm going to apply this on the hollows of my cheek and a little bit on my jaw area and also on the sides of my nose as well. इससे आपके फेस को अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा एंड आपका फेस बहुत ही chic एंड क्लीन दिखेगा. Then to give my face some natural glow, I'm using this K Beauty blush, and again I'm dusting off my brush and I'm applying this on the apple of my cheek, little bit on my nose and also on my chin area. हाइलाइटर के लिए भी मैं के ब्यूटी का ही हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस विद द सेम ब्रश एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन द ब्रिज ऑफ माय नोज, लिटिल बिट ऑन माय फोरहेड एंड ऑल्सो ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस, लिटिल बिट ऑन द चिन एरिया एज वेल. एंड इसको मैं थोड़ा सा अपने आईब्रो के जो हाई पॉइंट्स है उस पर भी लगाने वाली हूँ. Now I'm very happy with my face makeup and it's completely done. Now it's time for the eyes, and for that today I'm using the Swiss Beauty eyeshadow palette, and first I'm going to use this peach shade on all over my eyelid, and here I'm using a eyeshadow flat brush. To make my eyes look bigger, I'm going to drag the brush on my lower eyeline as well. इसको सिर्फ आपके आउटर लाइन पे ही लगाना है, आपको इसको इनर कॉर्नर तक ड्रैग नहीं करना है.
Now to darken up the area more, I'm going to use this darker shade, and for that I'm using a round eyeshadow brush in a smaller size. Once I'm happy with the blending, I'm going to apply this kajal from Key Beauty. First I'm draw the line on my upper eyeline, and then I'm going to smudge this with this smudger. Now as it's Diwali, so I need my eyes to look more pop up, so for that I'm using an eyeliner as well, and I'm using the Maybelline eyeliner. इस eyeliner को मैं अपने upper eyeline के एकदम upper eyeline के ऊपर से ही लगाने वाली हूँ. I'm not gonna drag it too far. एंड ऑल्सो इस eyeliner की मदद से मैं एक छोटी सी विंग भी बनाने वाली हूँ. And then for my brows, I'm going to use this brow kit from the brand L'Oreal, and I'm in the shade medium dark. First I'm going to dust off the excess product from my brows, and then I'm going to fill any brow gaps. And then I'm going to apply the mascara for my both upper and lower lash line. Here I'm using this MAC mascara and it's kind of waterproof, so आपको वो वाली टेंशन भी नहीं रहेगी कि दिवाली के टाइम पे कि अगर आँखों से पानी आए and everything. And with this I'm done with my eye makeup. Now my face and eye makeup is very sober, and also the sari color is not too dark, not too light, so I want my lip to be pop up. So for that I'm using first I'm going to line my lips with this Nika lip pencil, and then I'm going to apply the Russian Red from the MAC. बट अप्लाई करने के बाद मुझे लगा ये कलर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा चेरी रेड वाला एक फीलिंग आ रही थी. सो टू मैक्सिमाइज द मरोनिश लुक उसके ऊपर से मैंने ये एक ब्राउन लिपस्टिक लगा दिया. एंड देन आई एम एडिंग माई ज्वेलरी. मैंने अपना हेयर स्टाइल भी ऑफ कैमरा कर लिया है. उसके बाद मैंने अपनी ज्वेलरी डाली. मैंने एक नेकलेस पहना, उसके साथ मैंने एक झुमका पहना, हाथ में मैंने 2 चूड़ पहना है. एंड नाउ मैंने एक मरून बिंदी लगाया है. हेयर स्टाइलिंग भी मैंने कर लिया है. उसके साथ मैंने रेड रोजेस लगाया है. सो इससे एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि मेरी साड़ी मोनो कलर की साड़ी है. उसके साथ ये गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी मोनोटोनस लग रहा था, इसलिए ये रेड रोजेस, ये रेड
polar and this bindi look creates a beautiful look. I आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, let me know in the comment section and also don't forget to subscribe my channel for more such videos.